आइए अब देखते हैं प्रेगनेंसी के दौरान सफर के समय क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। Reduce stress. Make a detailed planning of traveling, including mode of transport, duration of journey, meals, and accommodation well in advance. This will reduce your travel-related anxieties considerably. अपने साथ में उतना ही सामान रखें जिसे आप अपने हाथों से उठाकर चल सके। Conserve your energy. प्रेगनेंसी के कारण आपको सफर के दौरान पहले से ज्यादा थकावट महसूस हो सकती है। टेकिंग अ बाथ, a short nap, keeping your feet slightly raised, or just spending a quiet evening in the hotel room can provide you rest and preserve your energy levels. Eat and drink smart. सफर के दौरान नियमित समय पर पोषक और संतुलित खाना खाते रहना आपके लिए बेहद जरूरी है। You can include nuts, dried fruit, and crackers with low-fat cheese in your food items. Carry bottled water and drink it regularly, especially during a long journey to avoid getting dehydrated. Pamper your feet and legs. प्रेगनेंसी की स्थिति में काफी समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने से आपके पैरों में सूजन और ऐंठन हो सकती है। Take a walk or do some stretches every 30 minutes. Elevate your legs by resting your feet on some support. Protect yourself with vaccinations. अगर आप किसी विदेश यात्रा पर जा रहे हो तो वहां की स्थिति के अनुसार आपको किसी अतिरिक्त वैक्सीन की जरूरत हो सकती है। प्रेगनेंसी में कौन सा वैक्सीन आपके लिए सुरक्षित होगा, इस बारे में अपने डॉक्टर की सलाह लेना मत भूलिए। During pregnancy, as far as possible, avoid countries where risk of diseases is high. Protect from fungal infections. Beware, if you are traveling to a hot and humid climate, you are more likely to develop fungal infections. इनसे बचने के लिए हल्के और पतले कॉटन के कपड़े ही पहनें। अपने टाइट जीन्स और पैंट्स को घर पर ही छोड़ दें। जरूरत पड़ने पर आपके डॉक्टर की सलाह से किसी एंटी फंगल क्रीम का उपयोग भी कर सकते हैं। Stay safe. Avoid taking risk. While you are on a vacation, avoid all activities including sports like skiing, ice skating, or horse riding that put you at a high risk of falling. And don't forget, water slides and many amusement park rides are risky as well. Hot tubs and spas जैसी भी एक्टिविटी जो आपके शरीर का तापमान बढ़ाती है, उनसे बचकर रहे क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए हानिकारक हो सकती है। সঠিক ও উন্নত মানের স্বাস্থ্য পরিষেবার লক্ষ্যে আপনাদের পাশে বিদ্যা হেলথ প্লাস অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার। এখানে রয়েছে অত্যাধুনিক কম্পিউটারাইজড যন্ত্রের মাধ্যমে সমস্ত ধরনের রক্ত পরীক্ষা, এসএনএসি, বায়োপসি ও ইমিউনোলজিক্যাল পরীক্ষার সুব্যবস্থা। রয়েছে ইসিজি ও ইউএসজি পরিষেবা। এছাড়াও পিজি হাসপাতাল ও স্থানীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে গঠিত অত্যাধুনিক পলিক্লিনিক এবং আধুনিক ঔষধালয় বিদ্যা হেলথ প্লাস কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট। সঠিক ব্যয়ে আপনাদের সেবায় বিদ্যা হেলথ প্লাস। আমাদের ঠিকানা 493/B/3 জিটি রোড, নীলাচল অ্যাপার্টমেন্ট, শিবপুর থানার ঠিক বিপরীতে। Hi,
I am Dr. Naveen. Today we will see why vaccination is important. Vaccination can save your child's life. Diseases once killed thousands of children. Today, they have been eliminated completely with the safe and effective use of vaccines. We should follow the vaccination schedule. Let's see how. Your baby is born. You are happy beyond measures. But don't forget your first responsibility towards your child. Your newborn baby should get these vaccines: BCG, oral polio vaccine, hepatitis B vaccine. You are completely devoted to taking care of your child. But before you know, your baby is 6 weeks old. It's time for the next vaccines: DPT or DTPA, HIV vaccine, oral polio vaccine, hepatitis B vaccine. Your baby has started to move from side to side. She smiles, flashes her eyelids. It's been 10 weeks. Time for vaccination. DPT or DTPA, HIV vaccine, oral polio vaccine. It's been over 3 months now. Your baby may try to speak now, a slight blabbering. Her voice brings a broad smile on your face. With the happiness of parenthood comes responsibility also. Don't forget to give her these vaccines at 14 weeks. DPT or DTPA, hepatitis B vaccine, HIV vaccine, oral polio vaccine. 6 to 9 months after birth. Your baby has become more active now. She has started crawling. She tries to sit but falls down. You need to keep a check on her activities all the time so that she does not get injured. At the same time, you need to get her vaccinated with measles and oral polio. 1 year after birth. Hooray! Your baby is of 1 year now. You're busy planning her first birthday party. Your precious child's health needs a planning too. Don't forget to get her vaccinated with varicella vaccine, hepatitis A vaccine. Within a year and a half, 18 months, the baby slowly tries to stand. She needs your support at first. Make sure you have given her these vaccines: MMR, measles, mumps, rubella, HIV booster dose. 2 years. Your baby is 2 years old now. She can stand now. She can walk. She plays at home as well as you take her to the park to play. Take her to the doctor also for these vaccines. It is important. DPT or DTPA booster dose, oral polio vaccine, typhoid vaccine. 5 years. Your child is 5 years of age now. She goes to school. She is a lot more active than earlier. She interacts with other kids. She is outdoors playing. She needs protection so that she does not catch any disease. Get her vaccinated with second dose of MMR, measles, mumps, rubella, DPT or DTPA booster dose, oral polio vaccine. Following the vaccine, child protected from diseases. Consult your doctor for your child's vaccination. The doctor will guide you through the entire vaccination schedule. Respiratory allergies in children. Does your child always have a runny nose, cough, itchy and watery eyes? If this is the case,
then he may have respiratory allergies. Examples of respiratory allergies are allergic rhinoconjunctivitis and allergic asthma. The symptoms may include wheezing, coughing, shortness of breath, sneezing, runny nose, sinus problems, and also red, watery and itching eyes. एक पदार्थ जिससे आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तगड़ी प्रतिक्रिया देती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज का उत्पादन करती है, उसे एलर्जन कहा जाता है। सबसे आम एलर्जी कारक घर में धूल के कण, पोलन, पालतू जानवर, फंगल या मोल्ड बीजाणु, भोजन, अंडे, समुद्री भोजन, फल और नट्स, मधुमक्खी और अन्य कीड़ों के डंक, कई दवाइयां, घरेलू रसायन जैसे डिटर्जेंट, इत्र। आम सर्दी से एलर्जी कैसे अलग है? एलर्जी और सर्दी के लक्षण जैसे नाक बहना, खांसी और कंजेशन इतने समान है कि दोनों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो दोनों के बीच का अंतर समझें। यदि आपका बच्चा 3 साल की उम्र के अंतर्गत है तो एलर्जी की संभावना नहीं है। वह लंबे समय के लिए कारकों के आसपास नहीं रहा कि उसमें वे विकसित हो। यदि लक्षण 2 सप्ताह से भी कम रहे तो यह जुकाम हो सकता है। यदि आपके बच्चे का बलगम पतला और स्पष्ट है तो शायद ये एलर्जी है। मोटा पीला बलगम जुकाम की पहचान है। यदि आपके बच्चे की आंख में, नाक में और गले में खुजली होती है तो ये शायद एलर्जी है। Allergies can emerge any time between infancy and adolescence, but you can reduce or delay your child's risk by lessening your child's exposure to common triggers of respiratory allergies. Though allergies are on the rise, there are things you can do to minimize your child's risk of developing them. Cigarette smoking during pregnancy impairs fetal lung function and may increase the risk of wheezing in infants. Breast milk strengthens an infant's immune system and helps to prevent allergies. For children under 1, breastfeeding can protect a baby from respiratory allergies like hay fever. Use pesticides or herbicides at least once in a year to eradicate the pests from your house. Seal cracks in floors and ceilings, if any, so as to prevent accumulation of dust and insects. For older kids, trying your best to keep allergens away will help minimize their risk or at least reduce their symptoms. Dust mites. These microscopic spider-like creatures hide in and on upholstered furniture, carpets, mattresses, pillows, blankets, and stuffed animals. To keep the dust under control, wipe surfaces with a damp cloth and vacuum at least once a week. Reduce the exposure of your child to soft toys and wash them regularly if you want to allow your child to play with them. Mold. For kids with asthma, mold can worsen symptoms. Use exhaust fans in the bathrooms to remove the moist air. Avoid any water leaks so as to prevent growth of mold. Pet danger. If you have a family history of allergies, try to avoid pets like cats, dogs and birds in your house as it may trigger allergies. If you already have one, keep the animal outdoors as much as possible. It's wise to groom and bathe it frequently and keep it out of bedroom or play areas as well as the kitchen. Pollen. If your child is 4 or older and she sniffles, sneezes or coughs through the first weeks of spring, she may have hay fever, which is commonly triggered by pollen from plants and grass. If this is the case, try to reduce her exposure by closing the windows and doors. Keep windows closed at peak pollen times. सांस की एलर्जी के लक्षणों का इलाज करने के लिए अपने चिकित्सक की सलाह लें। इस तरह आप अपने बच्चे को एलर्जी से पूरे साल सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं।
6 स्वस्थ आदतें बच्चों का स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए। If your child is at a healthy weight now, you may wonder what you can do to help him maintain it. If your child is currently overweight, you may wonder how you can help her stick to a serious diet and exercise plan. Making healthy choices can help a growing overweight kid to maintain his weight so he can achieve his target weight as he gets taller. Small, healthy choices lay the foundation to maintaining your child's weight. Healthy habit number 1. Choose to eat dinner as a family. Encourage family health by having the whole family sit down to dinner together as often as possible. संशोधन से पता चला है कि पारिवारिक भोजन स्वस्थ आहार मोटापे का दर कम होने से संबंधित है और हमें भावनात्मक रूप से साथ जुड़े रहने में मदद करता है। Healthy habit number 2. Don't let your child set the menu. जब आप सब्जी, साबुत अनाज के साथ स्वस्थ खाना बनाते हैं, तब शायद आपके बच्चे को खाने में सब्जी पसंद ना आए। संशोधन से पता चला है कि अगर बच्चों को अलग अलग पदार्थ दिए जाने पर वे खाने का प्रयास करते हैं। Healthy habit number 3. Choose to reduce TV time. कई अध्ययनों से टीवी देखने और मोटापे के बीच एक स्पष्ट संबंध पाया गया है। विशेषज्ञ 2 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को दिन में 2 घंटे से अधिक समय टीवी ना देखने की सलाह देते हैं। Healthy habit 4. Choose healthy ways to manage stress. संशोधन ने दर्शाया है कि तनाव में रहने वाली माताओं के बच्चों को मोटापा हो सकता है। तनाव के कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि परिवार में स्वास्थ्य समस्या, पैसे के मुद्दे या अपने साथी के साथ समस्याएं। 4 healthy stress relievers. Talk it out with a friend, counselor or religious advisor. Use exercise as a way to burn off stress. Tell your kids about your stress using words they can understand. Look for support to help you with the things causing you distress from family, government programs, hospital classes, and so on and so forth. Healthy habit number 5. Choose to make sleep more important. संशोधन से पता चला है कि नींद की कमी वजन बढ़ने से जुड़ी हुई है। जब आपको पूरी नींद नहीं मिलती, तब हार्मोन्स और चयापचय प्रक्रिया में बदलाव से मोटापा का खतरा बढ़ता है। As kids hit adolescence, their body clocks reset and they become biologically wired to stay up late. Because schools start early, many teens are chronically overtired and at higher risk of obesity as a result. Healthy habit number 6. Choose to be conscious about family health. एक आहार विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ या बच्चों के वजन घटाने के विशेषज्ञ इस तरह के विशेषज्ञों के साथ परामर्श करें। अपने परिवार के आहार और व्यायाम के लिए मूलभूत समझदार बदलाव को अपनाएं। With persistence, you will be able to help your kids adopt healthy habits and these will benefit for the rest of their lives.
for babies. The right nutrition for your baby begins with you. WHO के मुताबिक गर्भावस्था के 270 दिन आपके बच्चे के शारीरिक विकास, दिमागी विकास और प्रतिरक्षा पर असर डालते हैं. Now let's talk about the various aspects of your baby's development and the nutrients that will help. Good for brain growth. आपके बच्चे के दिमाग का 70% विकास उसके जन्म से पहले ही होता है. नीचे दिए गए पोषक तत्व उसे बढ़ने में और उसके विकास में मदद करते हैं. DHA is an omega-3 fatty acid that builds a large portion of the brain structure. It also enhances memory and performance. आयरन खून के हीमोग्लोबिन का एक जरूरी हिस्सा है. आयरन खून में ऑक्सीजन लाता है. Folic acid helps in brain growth and formation of the central nervous system. It also protects the baby from defects of the spine. Choline is important for proper functioning of the brain and memory development. Iodine थायराइड हार्मोन की बनावट को बढ़ाकर बच्चे के मानसिक विकास में मदद करता है. Protein is an important part of the tissues and cells that form the brain. Good for immunity. These nutrients will keep you protected from germs and infections and thus protect your baby as well. Iron. It is an antioxidant which boosts immunity. विटामिन सी शरीर में आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है. Iodine is important to keep the immune system working and fights against disease-producing germs. Protein प्रतिरक्षी बनाते हैं जिससे शरीर को कीटाणु के खिलाफ लड़ने में मदद होती है. Zinc is an important part of enzyme that maintains the body's action against infection. Good for physical growth and development. At birth, your baby needs the body organs in a ready-to-work state. The nutrients below help her grow and develop before it is born. Proteins are the basic units that make muscles, tissues, and blood in the body. They are also an important part of various enzymes and hormones that keep the body working. Calcium दांत और हड्डियां बनाने में मदद करता है. ये दिल, नसों और मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है. Vitamin D is required for calcium absorption and bone mass of the baby. Zinc is an important part of DNA and RNA which create the genetic map of the baby. It is very important for physical growth of the baby. Energy is important for you to meet your increased needs at the time of delivery and during breastfeeding. Your little one also needs energy for her growth and movement within the womb. Make sure you include all these nutrients in your daily diet and you will have a healthy, happy baby at the end of 9 months.